Now exercise 4.2 question 1 second part, right? Quadrilateral letter GOLD is given. So let's first draw a rough figure of GOLD. Any four-sided figure you can draw. So I will draw this way GOLD. जब भी आप लेटर्स लेते हो GOLD कंटिन्यूस लेना है, राइट? तो व्हाट इज गिवन OL इज 7.5, राइट? GL 6 centimeter diagonal, this is 6. GD is 6 centimeter. LD 5 centimeter and OD diagonal 10 centimeter, right? Now look here, if we will take base LD here, then it will be easy. Without base it will tough for you, so we will take LD downside, but we have to adjust later. GOLD we have to write in continuous form, right? So I will make figure again and adjust here. Look here, if I will write this way GOLD, तो LD नीचे आ गया, तो LD is given 5 centimeter, right? So it will be easy for you if we draw base first. Then OL 7.5 centimeter. Then GL diagonal 6 centimeter, right? GD 6 centimeter. LD we written here. OD diagonal 10 centimeter, right? Now it will be easy for you, you can draw easily. First we will draw LD is equal to 5 centimeter. So start from 0 to 5. You name L and D, 5 centimeter, right? Now we will take L as a center and we will draw LO 7.5 centimeter. Afterwards we will draw diagonals from D to O 10 centimeter लेके जो इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा उसको O नेम देंगे और वो ड्रॉ करेंगे. पहले ये ट्राइंगल का कंप्लीट करते हैं, राइट? सो फर्स्ट टेक 7.5 सेंटीमीटर 7 और 8 के बीच का लोगे, राइट? 0 से लेकर यहाँ 7 और 8 का बीच का मेजर 7.5. नाउ टेक L as a center and radius is equal to 7.5. Draw an arc, right? Now किसको सेंटर लेंगे? D को, और D से ये डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर. Now 0 to 10 here. Now take D as a center. Draw an arc of 10 centimeter, right? ये 10 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ है. सपोज ये इंटरसेक्ट नहीं करता है तो आपको आर्क को थोड़ा लॉन्ग करना है, सो यू कैन इंटरसेक्ट इजीली. नाउ वॉट एवर पॉइंट इंटरसेक्ट गिव नेम O. ये पॉइंट कौन सा आया? O. नाउ जॉइन लाइन सेगमेंट OL and OD. In the last you can also join the all line segment together, right? Now what we do, again we will take L as a center and we will draw this diagonal, and this is given 6 centimeter, right? L to G 6 centimeter. So we will take again 6 centimeter. Take L as a center and radius is equal to 6 centimeter. Draw an arc, right? Now we will draw GD. Take D as a center and radius कितनी है? 6 centimeter. Again 6 centimeter. Draw an arc which intersect another arc. Which intersect which point? G. Right here G, right?
Now draw line segment GD. Point to point you have to match, right? Then OG and this diagonal GL, and write all measures. This is 6 centimeter, this is 10 centimeter, this 6 centimeter, and this is 7.5 centimeter, right? Now how to write step? First, what you have done? First we have draw लाइन सेगमेंट एल डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. उसके बाद क्या किया? टेक एल एज अ सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर. ड्रॉ एन आर्क. वी हैव ड्रॉन दिस आर्क, राइट? देन टेकिंग डी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर. ये कितने का आर्क ड्रॉ किया? 10 सेंटीमीटर. विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट ओ. जो आगे आर्क ड्रॉ किया था वो ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा. देन व्हाट वी डन? ड्रॉ लाइन सेगमेंट एल ओ एंड ओ डी. देन अगेन वी हैव टेकन एल एज अ सेंटर and radius is equal to 6 centimeter. Draw an arc. Then again we have taken D as a center and radius is equal to 6 centimeter. Draw an arc which intersect another arc at point G. G point में intersect किया, right? Then we have done draw line segment OG, GD and GL. Now this is the required quadrilateral of GOLD.